Hello everyone. Today we will discuss the novel The Beautiful Ones Are Not Yet Born. First of all, I will give you a brief introduction about the author. Kwei Armah is a Ghanaian writer. He belongs to the West Africa, Ghana, and in this novel he depicts the post-colonial condition after the independence. And the setting took place in the post-independence Ghana and between the Passion Week in 1965 and February 25th, 1967. And it was written in third person omniscient narrative technique, and it's a post colonial novel. Genre is post colonial and published in 1965. If we will talk about the title of this novel, it's very ironic. The beautiful ones are not yet born means the good people, honest people are present in Ghana, but they are hiding behind their backs because they are afraid to be eliminated. Because so much bribery, so much corruption was there. So they were frightened, they were scared, they were eliminated from their society after the independence. And the elite class, corrupt politicians, they were just following the colonizer behavior, and they are doing imitation, and they are just following the path of mimicry. Tone of the novel, because the writer is very disappointed and he used the harsh and vulgar words to show his sadness, like shit, stupid, fucking, bitch, get out, to show his anger. First of all, I want to tell you that Ghana society is a corrupted society where bribery is very common, from president to the minister to the down a line. And even parliament was a such institute who was supported in such kind of activities. Corruption in the Ghanaian society affect the society lower strata, like lower class, like poor people, political instability and economic sabotage and hero worshipping. These were the things which contributed by the corruption. Now we will talk about the main characters. The man was the protagonist of this novel, who is working in the railway office, and normally he's sending and receiving message through the Morse code. And as compared to the other Ghanaian people, he was honest man, he was a principled man, and which created so much problem for his family. Like Oya is the wife of the protagonist, who was not happy with the with the husband who is honest, and it's very difficult to fulfill the needs of the family, like children. Even the mother-in-law, she was really, she was disappointed and repeatedly asking whether the children are hungry, why they do not have the proper shoes, like that. And when he was sitting in the office, the timber merchant came, and he offered him a bribery, but he refused. At that time, he was such a man who was start laughing. Okay, why he refused? The rod which imprisoned everything in its effortless embrace. The life of Ghanaian people is just tempted by the wealth, and after the independence, the man is tempted with the lifestyle of the wealthy friend कुम सुन. यहाँ पे कुम सन जो है एक ऐसा करेक्टर जो उसका क्लासमेट है, जो एक वेल्दी करप्ट अनएजुकेटेड, आप कह सकते हो उससे कम एजुकेशन में, इंटेलिजेंस में कम है दी मैन की निस्बत, बट ही वॉज फीलिंग टू बी अ वेरी प्रॉस्पेरस इन दिस सोसाइटी. ही हैज़ द क्लास स्टेटस एंड हिज वाइफ ऑल्सो एस्ट्रेला, लाइक दैट. और फिर वो सोचता है कि यार मैं ज़्यादा से कैपेबल हूँ, बट जो है मेरी कंडीशन इज़ वेरी पथेटिक. सो ही वॉज सेइंग शिट, ही वॉज एक्चुअली स्टूपिड कि ब्राइबरी की वजह से उसने स्टेटस गेट कर लिया. इट वॉज अ टाइम द प्रेजिडेंट, मिनिस्टर, सबऑर्डिनेट आर ऑल इन्वॉल्व इन द करप्शन इन गाना. द सन्स ऑफ द नेशंस वर नाउ इन द चार्ज आफ्टर ऑल. ही कंप्लीटली द न्यू थिंग टुक आफ्टर द ओल्ड. ऐसा हो रहा था जिस तरह कोलोनाइजर का करप्शन, वही सारा सिस्टम दोबारा ही रेपिटेशन के साथ गाना के अंदर रिपीट हो रहा था. There is something so terrible in watching the black man trying at all the point to be dark ghost of a European. अब यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से
करप्शन ने इफ़ेक्ट किया और दी मैन को, उसकी फैमिली को, उसकी मदर इन लॉ को किस तरह वो इफ़ेक्ट हुआ, और साथ साथ हम डिफरेंट जो करेक्टर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। थीम ऑफ डिसेप्शन, पॉलिटिशियंस व्हेन दे वांट टू शो द फेक ड्रीम्स टू द पब्लिक। वो कहता है द ऑथर वाज टेलिंग कि क्या करते हैं जब इलेक्शन जीतने हो तो लोगों को क्या कहते हैं, फॉल्स प्रोमिसेस दिखा रहे होते हैं, ठीक है। आउटलाइन ऑफ द नॉवल में वो लिखता है, व्हाट will I be demonstrating for? All new men will be like gold. Some people view the deception as the way of making a life like, जैसे पॉलिटिशियंस हैं, elite हैं, like in Pakistan after the independence, या तो जो है आर्मी की गवर्नमेंट रही, या उसके बाद आप देखें तो elite class, भुट्टो family and Sharif family, two dynasties ruled in Pakistan. They have not any concern with the poverty of the Pakistani people. They have not any concern about the inflation. They have not any concern about the economy. They are just making the money laundering. That is the common. Same like the other countries. जितने भी आप कॉलोनाइज कंट्रीज को देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा ही होता है कि एलीट जो क्लास है वो ऊपर आ जाती है और उसी कॉलोनाइजर के बिहेवियर को फॉलो करती है। इसी तरह अगर आप फ्रांस फेनॉन का जो वर्क है पढ़ें, द रेचिड ऑफ द अर्थ, तो उसमें भी उसने डिपिक्ट किया है इन सब चीज़ों को। What was there to reply to the trick and deception of the innocent? बेवकूफ़ बनाना है लोगों को, ठीक है, अपनी बातों से। अकॉर्डिंग टू द गोगी व तियांगो, वो भी कहता है ब्लैकनेस इज नॉट ऑल दैट मेक्स अ मैन अ वाइट मैन वुड ऑलवेज बी अ वाइट मैन। जो मर्जी कर लो, ठीक है, तुम जितनी मर्जी उनकी नकलें कर लो, वाइट मैन ही होता है। बट अ ब्लैक मैन ट्राइंग टू बी अ वाइट मैन इज़ अ विकेड, कि उसकी मिमिक्री करता है, उसको फॉलो करता है, उसके लाइफस्टाइल को। इसी तरीके से ओयो इज़ द वाइफ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट दी मैन। She is the ambitious personality and she always complaining to her husband that he should do the same thing like the other people, and she is the opposite to her husband. She respect the people who belongs to higher class, and when the man returns home, and one evening after inviting the son and Estella his wife, and on the dinner Oyo desired to the luxurious life of Estella कि उसके पास भी पर्सनल ड्राइवर है, मेरे पास भी होना चाहिए। Oya wants to serve the finest European liquor। अब खुद सोचने की बात है, वो तो एक अनस्ट आदमी, उसके पास कहाँ से पैसा आएगा, लेकिन क्या द मैन क्या करता है, लोकल जो बेर है वो ले आता है। At the end of the novel, Oyo undergoes the significant change when the Kumsun falls from the power and comes to their house with weak and dependent। ये वो टाइम होता है जब उसे शेल्टर लेना पड़ता है दी मैन पे, और फिर जब जो कर्मा होता है उसका रिजीम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कोप्स कर लिया जाता है, ओवरथ्रोन कर दिया जाता है, तो उस टाइम वो उससे दी मैन से पनाह लेता है, शेल्टर लेता है, और फिर उसको अरेंजमेंट करता है, बोट अरेंज करता है, और फिर वहाँ से जंप लगाता है और स्विम करके दोबारा बीच पे आ जाता है। सो शी एडमिट्स दैट हर हस्बैंड डज नॉट बिकम लाइक हिम, ठीक है, और फिर उसे उस वक्त एहसास होता है कि उसका जो शोहर है ना, जो कुछ कर रहा था ठीक कर रहा, क्योंकि बाद में फिर उसको जान का भी खतरा हो जाता है, ठीक है, कर्मा की जब गवर्नमेंट जो है ओवरथ्रोन होने के बाद। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेस होती है अस्टेला की लाइफस्टाइल से, और फिर वो उसकी मदर इन लॉ भी मौजूद होती है डिनर पे, वो उसे कहती है कि हमें कोई हमें जो है ना ऑनरशिप ऑफ बोट के हवाले से बातचीत करती है, कन्वर्सेशन, जो कुमसुन होता है वो एग्री कर जाता है। वो फिर कहती है, फिर जो ओया होती है अपने हस्बैंड के साथ, दी मैन के साथ, वो एक हाई सोसाइटी में टैक्सी लेकर वहाँ जाती है, मूव करती है, उसे पता चलता है बड़ा कि वो एक हाई फाई जो है ना सोसाइटी में रहते हैं, उससे बड़ा ज़्यादा इम्प्रेस होती है, वहाँ जाकर अपनी मदर के बिहाव पर उसे सिग्नेचर लेकर करती है। कुछ इसमें कुछ ट्विस्ट है स्टोरी के अंदर। फिर उसके बाद कुम सन की हम बात करें, ही इज़ अ सोशलिस्ट मिनिस्टर ऑफ कर्मा एंड ऑल्सो द क्लासमेट ऑफ प्रोटैगनिस्ट। दोनों की गहरी दोस्ती है। ही बिकेम अ पार्टी मैन अंडर द रिजीम ऑफ कर्मा, एंड कुमसुम एंड हिज वाइफ एस्टेला बिलोंग्स टू हाई अपर करप्ट घानियन सोसाइटी। जिसके पास पैसा है उसे क्या परवाह है, और उसे ये भी नहीं परवाह कि पैसा कहाँ से आ रहा है। द ब्लाइंडिंग ग्लेम ऑफ द ब्यूटीफुल न्यू हाउसेज एंड द शाइन ऑफ द पावरफुल न्यू मर्सिडीज are the things that are the foundation in the person of the son। यही तो चीज़ें हैं। हम ये नहीं देखते कि पैसा कहाँ से आ रहा है, किन रिसोर्सेज से आ रहा है, करप्ट रिसोर्सेज से, डिसऑनेस्टी से आ रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किस तरीके से वो सर्विंग कर रहा है। कुमसन्स पावर हैज़ बीन गेन थ्रू द corruption। कुमसन became a symbol of western influence।
वैसे ही पावरफुल शो करना, अपने आप को पावर गेन करना थ्रू द मनी। द टीचर वॉज द एन अदर करेक्टर। ही इज़ अ पर्सन, यूजली ऐसा होता है दी मैन जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो अक्सर द टीचर के पास विजिट करता है, उसे एडवाइस ले रहा होता है, ठीक है। और ये ऐसा बंदा होता है जिसने अपनी लाइफ जो है गाना के लिए सर्व की है, सेक्रीफाइस की है, बट एट द एंड वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। और जो द मैन जो प्रोटैगनिस्ट होता है उससे कन्वर्सेशन भी करता है, उससे पॉलिटिकल जो कंडीशन घाना की उसकी करप्शन के बारे में उसके साथ डिस्कशन भी करता है। द मैन हेल्प्स हिम टू एस्केप फ्रॉम द कंट्री। क्रिटिकल अगर एनालिसिस में टीचर को फर्दर एक्सप्लोर करें इस करेक्टर को, इट्स अ मिडल एज्ड मैन, इज अ करेक्टर whom the man visit and seek the advice and encourage the man to admit that he understood how his wife Oyo disapprove of his जो उसकी जो ऑनेस्टी है उसको। ही ऑल्सो कॉल्स द मैन ब्रेव स्टिकिंग टू हिज प्रिंसिपल। उसे थपकी देता है, इनकरेज कर, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बीवी करती है, मुझे अंदाजा है, लेकिन तुम्हें ब्रेवरी का मुजाहरा करना चाहिए। मनान, शी वॉज एन अदर करेक्टर एंड वी विल नो अबाउट दिस फीमेल करेक्टर थ्रू द डिस्कशन ऑफ टीचर एंड द मैन। शी इज़ द ब्यूटिफुल वुमेन, लॉयर भी थी, और हु इंट्रोड्यूस हिम हिज फ्रेंड टू द ड्रग कार वी एंड दे यूज टू असेस द वाइडर। अब ये भी ऐसी खातून थी जो कि इफेक्ट हुई थी घानियन सोसाइटी के अंदर करप्शन की वजह से। एट द लास्ट क्या होता है, वो स्केप गेट करने के लिए स्मोकिंग करती है और फिर वो मैड बन जाती है। एज टेल एज द वाइफ ऑफ सन, शी वॉज ऑल्सो लाइक हर हस्बैंड एंड स्पेंडिंग द ग्लैमरस लाइफ, luxurious house, personal driver, this and that. She's always show the pump and show, and the OA is always impressed from the Comson's wife. Goofy Belly is another character who is a dog worker. In the novel, there is an incident. ऐसा होता है कि इस बंदे की जो लेग होती है फ्रैक्चर्ड होती है, मतलब ये कि कट जो लॉस्ट कर जाता है, लॉस्ट होने की वजह से वो उस मेटल या वुड की जो आर्टिफिशियल जो थे फेक वो यूज़ करता है, और उसके लिए ज़िंदगी बड़ी पथेटिक हो जाती है। और वो ये सारा जो एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट जो होता है, एक वाइट मैन की वजह से होता है। एट द एंड वो क्या करता है, सुसाइड कर देता है रोप के ज़रिए। और इंस्टेड ऑफ वैन वाइट मैन स्टैंडिंग देयर टू हेल्प हिम, रादर लेट हिम डाई एंड सेड he deserved it because he was moving too fast, me advanced way of knowing the truth. Uh, if we will talk about the different symbols, like in the start he was sitting in the old bus, so we can symbolize the old bus is just like a Ghana condition of Ghana, and he was daily using the bus local burst, and in the way he was watching the garbage piles and piles, the people instead of throwing the garbage in the garbage bin they are throwing nearby it. And although there were the instruction written on the garbage box there, that you have to take care of your country, you have to make your country clean, you have to clean your society, like that. So this all garbage and dirtiness represent the Ghana's current conditions. And the bus driver, it depicts the president of Ghana, bus driver who is controlling the bus, and he was also involved in the corruption, in bribery, who is charging the extra tickets, extra money from the passengers. And the bus conductor, it is the representation of the ministers. The man, it symbolizes the person who stand against the corruption but yet do nothing to stop it. Or even if such kind of a people do say something, it would not change anything due to the lack of the power and the support to make change. ये उस तरह के लोग हैं जो बेचारे एफर्ट्स लेते हैं, अपने ऑनेस्ट रहते हैं, अपनी लॉयल्टी है उनके कंट्री के साथ, अपने जो वर्क के साथ होता है। तो इफ द ओल्ड स्टोरी aroused anger, there was nowhere for it to go. This is the indication of dirty work president is doing with the country Ghana. We were talking about the Kwame Karma, yes. Action of the bus conductor and spotted by driver. अब क्या कर रहा है, जो बस कंडक्टर है वो ड्राइवरी ले रहा है और ड्राइवर कुछ भी नहीं बोल रहा, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो कहते हैं इसकी मिसाल ऐसी है बिल्कुल जैसे पार्लियामेंट सपोर्ट कर रही है प्रेसिडेंट को और मिनिस्टर्स को, एक पूरी चेन ऊपर से लेकर नीचे हायरार्की डेवलप की है, जो गलत करप्शन के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हु हैव बीन गिवन अ पावर टू प्रोटेक्ट द गानियन पीपल। आए किस लिए थे इक़्तिदार में, लोगों की जो वेलफेयर के लिए, बेनिफिट्स के लिए, बट दे टेंड टू मिस यूज इट एंड ओप्रेस द पीपल।
So we will come to the conclusion. The novel portrays the overall situation of the Ghana party. The man mimicked the colonizer from the way they speak, they dress, they to their corrupted politics. Bilkul, if we will remember the Homi ke Baba, he said that mimicry is the most powerful cleansing force. किसी की आप आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहें, उसे उसके कल्चर, उसकी वैल्यू, उसके ट्रेडिशन को, तो मिमिक्री एक ऐसा रास्ता है, इससे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी कोई हो ही नहीं सकती. Few months later, at the workplace that the coup has overthrown the Karma regime, the people were excited about the change, but the man was not, because he was not bothering it. अगर कर्मा का regime change होगा, इससे क्या फर्क पड़े, नए लोग वो भी वैसे ही होंगे. That अब जो कोप आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं. पावर स्ट्रक्चर वैसे ही रहना, करप्शन वैसे का वैसे ही रहना, क्योंकि मेन जो फोकस था वो करप्शन था. लोगों के चेंज से फर्क नहीं पड़ता. करप्शन को ख़त्म करना, सोसाइटी की मोरालिटी को डेवलप करना. मोरली, जिस सोसाइटी की मोरालिटी ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर करप्शन आम हो जाता है. जब राइट एंड रॉन्ग जस्टिस जो है ख़त्म हो जाएगा, डेफिनेटली करप्शन विल बी ब्रॉट अप. Completely apart from all that was taking place, he was not burdened with any hope that the new things were as yet ready to come out. And tragedy of Kumsan, the represent his downfall due to the change in the power structure. अब उसकी tragedy को depict कर रहा है Kumsan की, from prosperity to the pathetic situation when he has to take the shelter from the man. So when he was when he was at the beach, और उसने थोड़ी देर रेस्ट करता है, आराम करता है, थोड़ा सा सोता है, उसके बाद उठ बैठता है, और फिर आस्ते आस्ते चलता अपने घर की तरफ चलना शुरू हो जाता है दी मैन. और आफ्टर दे स्टार्ट ही स्टार्ट वॉकिंग एंड रीडिंग द फ्रेज रिटन ऑन द बस, द ब्यूटीफुल वंस आर नॉट born yet. He was hopeful, he was optimistic, change will come, and walk slowly towards his house. This is all about this story. I hope you understand and enjoy it.